This is a great moment. What we saw today, that all the people who are handicapped and having some short in their life, how they have achieved and what they are doing now, is something good lesson for everybody. And I wish Dr. Batra and his foundation a great thing for all the movement. And as a citizen of the Mumbai, I'm very proud that this kind of things are happening in the Mumbai city. Thank you very much. डॉक्टर बात्रा की सर्विस के बारे में क्या बोलूँ मैं? डॉक्टर बात्रा is a doctor of homeopathic. So homeopathic medicine gives a good results, but having a slow effect. Take 2 tablets 3 times a day, and then you get the effect after 3 months. That is the thing. But when you get that 3 months effect, it's absolutely positive. You are always come out of that. That's the Dr. Batra's technique, and that is Dr. Batra's trick. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. 5 मिनट लगेगा. First clear this then. हाँ. Okay, come here. Yeah. Sonakshi center, look your center. Look अजून दादा आतमध्ये गेला दादा सोनाक्षी यहाँ पे आत ये ना सोनाक्षी इधर ही आने वाली है. घेऊ दे मला दादा सोनाक्षी राईट सोनाक्षी Thank you. Go back. Now we have the video bites. Come on. Yes. Come. Bouncer. Push करो. Sir, पिक्चर नहीं मिला okay. अच्छा. इतना टाइम क्या कर रहा था? जी. या मैं क्वेश्चन सुन के लुक सेंटर ले आ जाऊँ. We'll start with her. Everybody will get. Start. Yeah. Please. What is the message that you would like to give today in this inspiring moment? I think the message that I got today, I don't think I'm too little right now to give any message, but I've seen such wonderful, inspirational people here at the Positive Health, Dr. Batra's Positive Health Awards, and I'm so happy that I could come because I take away so much from this, like nothing is impossible. These people have achieved so much in spite of the difficulties that they faced in life, and they're truly inspiring, so I'm really, really happy that you called me here today. Thank you. Any moment and probably you have tried overcoming. I think it would be very silly of me to speak of any adversity that I have faced because it is nothing in comparison to to the kind of people what they have faced that I have seen today. And honestly, it would be just ridiculous even speaking about it because if I would have been put through any of the situations that I saw these people have been through, I don't think I would have come out even quarter as victorious as they have. They're truly inspiring and honestly, I have no problems and I'm thankful to God for that. Do you have any message for Dr. Mukesh Batra and Dr. Akshay Batra? Yes, I have a very big message. They've known me since I was a child and I am really happy that I could be a part of this function today because it's family and I'm truly, truly inspired by everything that I've seen today. So yeah, thank you. And what do you think about the initiative taken today by Dr. Batra? I think it's a great initiative. I think it's something that they have been working so tirelessly for so many years to improve people's health and condition and the people that we've seen today have just
come out victorious facing adversities, facing problems, and they inspire everybody to just be better, and I feel that is what they are doing as well, just making people be better, the best versions of that they can be, and yeah. इनसे लेते हैं, आपको बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. हाँ नहीं, बचपन में मैं एक्चुअली जाती थी क्योंकि मुझे वो होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत पसंद आती थी, तो मैं स्कूल के बाद भागती थी इनके यहाँ ताकि वो मुझे वो छोटी छोटी होम्योपैथी की गोलियाँ दे. जी, सिचुएशन देखकर जो डिमोनेटाइजेशन का हुआ इससे उसके बावजूद फोर्स 2 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड आई एम हैप्पी. और बेहतर हो सकता था, बट वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस, तो जितना अच्छा हो सका वो हुआ, एंड आई एम हैप्पी. नंबर्स में से मत पूछो, मुझे नहीं आता. पोस्ट में जैसे आपने बताया कि मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, डिमोनेटाइजेशन की बात की, बट फिर भी इंडस्ट्री की ओवरऑल बात कीजिए और भी दूसरी फिल्में रिलीज हुई थी, तो कितना फर्क पड़ रहा है आपको, लग रहा है इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा है? आई थिंक सबको पड़ा है, नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, हम सबको पड़ा है. और थोड़ी देर के लिए हमें वो थोड़ी बहुत असुविधा सहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये कदम उठाया गया है दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. सो आई फील थोड़ी बहुत असुविधा सहनी पड़ेगी, एंड इट विल बी फाइन वेरी सून. आई होप, विश एंड प्रे. Guys, one more question on PHA. Any question on PHA, please? I just saw the poster of the new film. Yeah. Sorry, only PHA. Last question, guys. Last at least. I'll talk about Noor some other time. You want to ask me something more about this? सोनाक्षी, हेल्थ की बात हो रही है तो जी. हेल्थ को लेकर हमेशा बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा है, तो कितना प्रेशर खुद आप लोग फील करते हैं जब हमेशा परफेक्ट रहना पड़ता है, अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है? आई थिंक प्रेशर हम पर डाला जाता है, एंड जिसे फील करना है वो फील करते हैं. आई हैव ऑलवेज बिन समबडी हुज प्रोजेक्टेड अ वेरी हेल्दी बॉडी इमेज, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि यंग गर्ल्स एट एन इम्प्रेशनेबल एज हमें देखते हैं, एंड लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं उन्हें कोई गलत संदेशा नहीं देना चाहती हूँ. एंड ऑनेस्टली यू हैव टू बी हैप्पी एंड हेल्दी अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. आना आगे ना पीछे आना. ज्यादा आप ज्यादा